don't accept that. So, it's a big, because they've won 5 World Cup. The most successful football team in history of the world is Brazilian team, winning 5 World Cups. For them, last 24 years have been a disaster. They've not been able to win it. They've come close to winning it once, twice. So for any footballing fans in Brazil, for them, qualifying for the World Cup is there. But if you don't win live nahi hai kya? it does not come to success. Is this live? It's about Oh yeah, this is going to the live. World Let's Cup and go. winning that Let's trophy. go. That's Let's the only go, success Brazilian team bro. would want to identify, and the fans want to identify. In one word, is he the best manager at this World Cup? For me, yes. Absolutely, yes. There we go, no debate. I don't think many people could argue with that. I wonder what you think. Anyway, let's take a break, after which we will focus in on the match that becomes first tonight on the agenda, and that's Qatar taking on Switzerland. Of course, Qatar Let's were go. great hosts back in 2022, but they are still in search of their first victory Let's at a go. World Cup, and they're up against the Swiss, number 19 in the world, and they come with great pedigree. Their captain Xhaka is actually a hugely influential part of their side. So we'll bring you the team news. We'll delve into the teams in more detail on the other side of this break. मम्मी के साथ वो क्यों साउंड किया आ रहा है हम ना लोगों मेरा? ने? अबे ये सब क्या है ब्रो? ये सब क्या है भाई? अच्छा, इंडिया ब्रॉडकास्टिंग में कुछ भी दिखाएंगे वर्ल्ड कप के बीच में? What? No way. Dale, let's go. Die, ego. Dale, let's go. What's the match between? What's the match in between? I'll write team's name and comments. Okay, good. How should I write it? Pin message. Pin message. Let me check my other channel as well. Die, ego. Darling, let's go. Option, pin message. Yeah. Okay. That match will kick off a little bit later on. We've got Qatar taking on Switzerland before that. But we have had a bit of a conversation here in the studio about the superstars that we will get to watch across the World Cup. Remember, we've still got to watch France, Hello. Germany, हाँ, आ रही है ना आवाज मेरे को? Nice, okay, England, ठीक है, lots ठीक of है. superstars on display. I was going to come to Croatia. Hello. Of course, they play England. Hello. We're going to be best friends on that night. यार ये आवाज कम करूँ क्या मैं? Are there any particular other stars you're looking forward to watching? अभी ठीक है. Hello. नहीं, कितना आ रहा है आवाज? Hello, am I audible? पीछे हो गया क्या? Last World Cup. You Oh, can like, imagine ठीक है. the kind of pressure I think he's going through. He's one of the greatest players the world has ever seen. ठीक है. Hello. For him not to win it with Hello. that team with Portugal, the kind of Hello. players Yeah, in let's this go, World Cup, I let's think he's go, one of the let's best teams to go. win it. The pressure is huge on Ronaldo whether he's going to win it this year. Let's Oh, go. he would love to bow out, wouldn't he? And end his international career with a World Cup victory. I mean, it's easier said than done, but this Portugal side that he is part of is absolutely We'll be in incredible. action on Definitely one of the 17 favourites June. now. What? And he deserves lots of credit to create this squad, this aura around this Hi, squad. Shruti. He helped many of these players to rise up
alongside him. to Kylian get, Mbappe will be in most action on June famous and 17. best clubs all over Europe and the world, and they really stand a good chance because they have magnificent squad. Yeah, absolutely. And then there's, of course, Lionel Messi. And as you said, the eyes of India cannot wait to watch Ronaldo and Messi. Of course, Messi lifted the trophy back in 2022, and he is just always such a big part of any match, in any league, in any tournament around the world, because he is a superstar. I think Messi's got huge fan following in India. I think we saw that when Messi had a tour of India. Every place, every town, city he went, we had 80,000 Crazy, people bhai. in the stadium to just get 10 seconds of Messi's glimpse. So that's the kind of fan following we have of Messi in India. Yeah, absolutely. They are two superstars, and these are the key fixtures that you can look forward to watching. Okay, France so against is Senegal, this that's on like the Indian 17th of English, June. France, And on the same night, Algeria, so this is another night Argentina, that you or will not want to Portugal? miss. In fact, I don't Oh think you will भाई, miss Kylian anything, Mbappe, but Messi, Argentina Ronaldo, taking on ये Algeria तीनों का in मैच है क्या? Portugal 17 जो कुछ against 12 DR Congo. My 6:30 goodness, सुबह और it's going to be oh fuck, absolutely Messi का सुबह incredible 6:30 that बजे मैं night. क्या करूँगा? Superstars रात को कितने बजे everywhere सोऊंगा मैं? you look. As for what we are looking forward to tonight, Crazy होने वाला है so भाई, we have मजा आएगा. Qatar against Switzerland, of course. That is a match that we are building up to now. Not long to go until kickoff, just about half an hour to go. What are you expecting to see from Switzerland, Igor? I expect to see dominance. I expect to I see expect dominance, to see high press, high press. ball possession, and lots of crosses and lots of movements, quality movements, because this squad has been producing results for a long time. They have stability in all lines, compactness in all lines. So, as far as I'm concerned, they are one of the most consistent squads by the results in Europe. And I was just looking at the players that have retired in recent years. In Shaqiri, recent Jan years. Sommer, कितना Fabian टाइम बाकी है? Schär, क्या टाइम हो post रहा है? Euro अभी 24. तो बहुत टाइम It बाकी है. just feels like there's been a real changing of the guard. Yeah, slow change, but planned change. I would say so. They remind me of Croatia also. I need to 15 mention मिनट again, है. because we had a World Cup final in Shiraj Russia Juman, in these 2018. 15 Then we had minutes. 6 players from this squad saying goodbye to the national team because of the age, and the change came. But the national team coach was earlier planning and यार, watching FIFA the का कोई players Discord who नहीं है could क्या? replace those who are on their way out, and we didn't suffer because of that. 4 years later in Qatar, we are there again in the semi-finals. So Swiss is doing very अभी पैसे ट्रेनिंग देगा ना, इतना ट्रेनिंग था भाई अभी पैसे ट्रेनिंग देगा भी इंग्लिश कर रहा है. पार्ट टाइम मॉडरेटर Zomato, ट्रेनिंग Zepto, करो Swiggy. दी दो अरे नहीं फ्लिपकार्ट भाई माइनस सुबह जा रहा ब्लिंकिट. हूँ, पावर पावर ये क्या है भाई? फ्री में काम करना भी कैसा लगता है भाई गोरख भाई आपका फेवरेट ऐप बताओ भाई इसमें से क्या क्या? फेवरेट ऐप बताओ इनमें से ब्लिंकिट. अरे यार थैंक यू कौन अब दिल दुखा दे यार तुमने तो. ओए हमारा एक साथी नीचे बैठा है ओक मेलोज वीसी में जय पौनब, जय पौनब, जय पौनब, जय तो पौनब. नायका भी है. गंदी बातें कर लो भाई तुम लोग बस. Die, ego, Alec, let's go. अब मैं स्ट्रीम चालू कर दिया हूँ. अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है. Lisa और FIFA anthem. ये लोग hate Why क्यों are दे रहे people इसको? hating Lisa's new 2026 FIFA anthem song, Goals? Because many fans feel it lacks the true football spirit, unity, passion, and national pride that classic World Cup songs usually have. A lot of people are saying the Yes. song focuses more on fashion, visuals, and party vibes instead of football emotions. The huge stadium scenes, flashy visuals, and strong pop culture vibe also made some fans feel disconnected from the actual World Cup atmosphere. Many people are comparing it to older FIFA anthems like Waka Waka and Dreamers. One Reddit user even wrote, "It doesn't sound like a World Cup anthem. Lyrics don't match football culture." By the way, what do you think about the song? Let me know in the comments. Why are people Like you get a meeting. Holy shit. आ रही आवाज मेरे को मेरी खुद की. नाइस. हेलो हेलो. हाँ ये ठीक है. Let me get the healing.
Dale, let's go. Z5 app. Download. Not long to go until Qatar take on Switzerland at the FIFA World Cup 2026. The fans are arriving with smiles on their faces. I wonder what sort of a match we can look forward to. What we do know is there's going to be stars on display tonight. The fans are in great spirits, and that's what we love about a World Cup. It brings people together, and football just has a way of uniting us all. Now, I want to get the Qatar perspective from you, Baichung. What can we expect? Qatar perspective. I think for them it's going to be a very, very difficult game tonight. Preparation for the World Cup has not gone well because of the situation in Gulf countries. I played against a lot of, Gulf countries, Arabian countries. अबे एक सेकंड ये भाईचंद बूटिया को लेके आ गए क्या? Way they play, which is more physical. इंडिया के पास कोई बचा नहीं क्या? And some play very tactical. I think this team, Qatar, if you look at it, they're going to go with 4-2-3-1 formation. The main man up front is going to be Afif Akram, the captain, who scored 39 goals so far, and he's going to be the man to watch out for tonight. Though they're going 4-2-3-1, but I think it's going to be more defensive as a team. They're going to make it very compact. And as I said, they've not had great preparation for the World Cup, but hopefully if they can keep it tight, because Switzerland are a very strong team. And whenever any teams from Arab, especially Gulf countries like UAE, Qatar, they play more technical kind of a game. They're not too physical. So whenever they get a physical European side, they struggle quite a bit. So I think today it's all about they need to get used to compete the physical part with against Switzerland, which is a very, very good side. And if they can keep it tight and try and keep first half goalless, second half on counters, they could get, they could get some opportunities. And now we're looking at the Switzerland lineup. This is their oldest starting 11 at the World Cup, with an average age of 30 years old and 86 days, surpassing their previous record from 1950 against Brazil, 28 years and 314 days. That said, they come with a lot of experience. Editing brain, what's up, Absolutely, a lot hello? of experience in various systems of the play. As we can Am go I back and audible? see the Oh first yeah, games I'm they audible. played, we can easily notice that 31st of May they played against Jordan, which is similar quality to Qatar. Defeated them 4-1 in formation 3-4-3, which is again showing up tonight for this match, which is telling us that we can expect a really high lineup. Who will win? From I think Swiss so. team. Lots of Qatar will press win on this Qatari match, bro. players and I guess, continuity like, I don't of know. the ball coming into the box of Qatari team. And they have a big leader in Granit Xhaka, who's had an excellent season for Sunderland, but he really is a true leader in every sense. He does his talking on the pitch as well. No, absolutely. Xhaka is the main generator of good Main actions on generator. the pitch, either defensively or offensively. He's a captain, leader. भाई कल ब्राजील का मैच यार, कल मजा आने वाला is है. here is India. Everything depends on him. Very resistant. Permanent in everything what needs to be done. Permanent in your favorite player. कतार में फेवरेट प्लेयर नहीं है, ब्राजील में, फ्रांस में किलियन एम्बापे, अर्जेंटीना में मेसी, बट अफसोस इस वर्ल्ड कप आई डोंट नो. एंड ब्राजील में मेरे को भाई ब्राजील में सपोर्ट कर रहा हूँ. ब्राजील में आई एम सपोर्टिंग दिस ईयर ब्राजील स्पेशली बिकॉज नेमार का कमबैक होने वाला है. और फ्रांस में किलियन एम्बापे का इस बार परफॉर्मेंस देखने का मेरे को. I want to see the performance of Kylian Mbappe this year. And here we go. You can see on your screen
two players really hoping to make an impact tonight. Ali, 14 appearances actually he's made at the World Cup, 12 goals in qualifying as well. But Mbola will hoping to also make an impact himself. What major It'll be difference, interesting to see both players on the pitch tonight. All-time favorite, Cristiano Ronaldo. Sweet. Well, that builds it up nicely, doesn't it? We're really looking forward to bringing you all of the coverage for Qatar against Switzerland. And we're going to take a moment to get... अबे आइशो स्पीड का सॉन्ग चला था क्या? हाँ तू ऐड बताओ. पैसा कवर कर रहा है, राइट्स खरीदे Z5 ने. Darling, let's go. Die, yo. Darling, let's go. मजा आने वाला है भाई. क्रेजी होने वाला है तो. प्लीज़ फॉलो सुयोग ऑन इंस्टाग्राम clutch_control. आप सुयोग को फॉलो कर सकते हैं. मेक्स वेरी नाइस कंटेंट. काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नॉलेज है सुयोग को. नोज हिज स्टफ. शुभम डे कह रहे हैं बाबा योर स्टूडियो लुक्स वेरी ब्यूटीफुल बट आई वुड लाइक यू टू कीप जूल्स रिमे ट्रॉफी रेप्लिका बिसाइड्स द वर्ल्ड कप. अच्छा लगेगा सेटअप. ठीक है शुभम भाई, कोशिश करेंगे. अब जूल्स रिमे ट्रॉफी जुगाड़ करने के. जूल्स रिमे ट्रॉफी किसी के पास नहीं है. वो ट्रॉफी चोरी होकर उसको गला दिया गया. हाँ, लेकिन हम रेप्लिका बना लेंगे. रेप्लिका बनाएंगे हम. बोलेंगे यही है भाई. एक कोई चैट में कह रहा था कि रक्षित भाई को हमने फरहान अख्तर से रिप्लेस कर दिया है. किसी ने एनसीसो बोला. Is that similar to Periscope? എനിക്കറിയാവുന്ന ഡാനിയലിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. Someone is helping him. Higher. Something good. What? Let's go. Karela story. Karela. Fuck bro, I think I need to purchase AC here, you know. Brazil versus Morocco, 14th June, live and exclusive on Z5 app. Download the Z5 app now. Hello. Hello. Yeah. With friendlies, they lost 1-0 to the Republic of Ireland in let's Dublin go. in late May, when Almoez Ali was actually sent off, and then they drew 0-0 with El Salvador in Los Angeles last Saturday. As for Switzerland, they've played a couple of friendlies as well. They beat Jordan 4-1 on the final day of May, and then they drew 1-1 with Australia in San Diego last Saturday.
Al Habibi. Out come the giant flags of the two competing nations. Qatar on the left, Switzerland on the right. For some of these players, playing at a World Cup is nothing new. For those who are making their FIFA World Cup debuts, the biggest match of their career awaits them in just a few moments' time. Will those players be nervous, or will they be quite calm about coming out into this cauldron here at the San Francisco Bay Area Stadium? And I use that word particularly because it is hot, hot, hot. Spacebound is spacebound है ना? Copyright ना आ जाए भाई मेरे को. Qatar have played in this stadium before. They were here at the 2023 CONCACAF Gold Cup when they beat Mexico by 1-0 here. Switzerland are unbeaten in their last 6 opening matches at a World Cup. 3 wins and 3 draws in those opening half a dozen games at the last 6 FIFA World Cup. Breel Embolo, there was a slight doubt because of injury earlier this week, but he is in the starting 11 for the Swiss. यार इधर मैं लैंप रखूं क्या? नहीं ना, समझ नहीं आ रहा मेरे को. लैंप अगर रखूं. It's the sort of day when you need a hat just like that to keep the sunshine off. We do have, of course, hydration breaks, which will, I would think, be very, very important today. Very much so. It's got all the makings of a truly cracking football match here, hasn't it, in Santa Clara? But these conditions certainly will play a key factor. Having the benefit of sitting up here and taking the game in, it's very, very warm. And once those players come out onto the pitch, after obviously seeing it in the warm-up, feeling it in the warm-up, they'll know just how tough their task is today. Let's go! Qatar, who lost all 3 group matches at the 2022 FIFA World Cup. They scored just 1 goal and conceded 7, losing 2-0 to Ecuador, 3-1 to Senegal, and 2-0 to the Netherlands. गोल कैसे डालूं? अच्छा गोल तो यहाँ से डाल सकते शायद. Granit Xhaka was perfectly focused but very relaxed yesterday at the pre-match media conference. There is the man in charge of Switzerland, the head coach, Murat Yakin. 4 goals in 49 appearances for him for Switzerland. Copy. Anxious wait in the tunnel for the 22 starting players of this Group B fixture. Please welcome today's twin teams, Qatar. Unbeliever, believer.
Qatar and Switzerland have only met once before. That was a friendly in Lugano back in November of 2018. Qatar won that friendly by 1-0. Akram Afif, who starts today, scored that goal after 86 minutes. And Qatar would love a similar result this afternoon. Talking to the former player Benjamin Hugel, who's here working for Swiss television yesterday, he was of the opinion, which was shared by many of the Swiss media, that this is a must-win match for Switzerland. And a reminder that whoever wins this afternoon, if indeed we do have a victor, will go top of Group B after the opening round of matches. All 26 players from both squads strolling out into the heat. A new innovation for this FIFA World Cup. भाई कल तो लोग पागल हो जाएंगे. Julian Lopetegui there on the right. The former goalkeeper who made one appearance for Spain. All the team news after the two national anthems. मेरा भी सपना था. ये साउंड क्यों नहीं प्रॉपर आ रहा, मेरे को समझ नहीं रहा. Let's go! Let's go! Woo, yeah! Now it's time for Switzerland. Outstanding if you were able for the playing of the national anthem of Switzerland. इंडिया कब आएगी यार वर्ल्ड कप में यार? fuck bro. क्या कर रहे हैं लोग? In our national anthem, we have to stand straight, and these guys keep their hand on their heart. So, okay. बच्चों ठीक से खड़े रहो. Ooh, yeah. Who is this guy? That's how you make flags on the cheeks. We are on the way for the first game and the second game of FIFA World Cup. Third game. भाई नया ऐड नहीं बताओ यार. तुम पागल हो क्या? ऐड बताने वाले हो? क्या फायदा भाई सब्सक्रिप्शन लेके? तुमको सिर्फ ब्रॉडकास्ट करने का भाई 800 रुपए दिया हुआ है सब लोगों ने. क्या? What happens when the game changes?
You keep moving. You keep slaying. Keep celebrating. And if they keep talking, keep them talking. Because no matter how far you've come, you keep walking. I hope तुम मैच दिखाओ अभी, ऐड नहीं दिखाओ. रेफरी व्यू, ओ भाई ये क्या है? ओए कॉपीराइट आएगा, कॉपीराइट आएगा. 1 2 3 4 5 2 ऑफसाइड के रेफरी है, 4 ऑफसाइड के होंगे ना. हाँ 2 ऑफसाइड वाले हैं. Visa Infinite. Referee this afternoon from Honduras. Said Martinez. Martinez is the match official, assisted by 2 fellow countrymen on each side of the stadium. And there are our VAR officials, led Hello. by Guillermo Pacheco. Support मैच ऑफिशियल्स बस 3 ही है, बाकी बता ही नहीं है शायद. Mahmoud Abunada is chosen in goal to make just his 7th appearance for Qatar, ahead of the vastly more experienced Michel Barsham. 5 भाई कॉपीराइट देंगे. बहुत अच्छा सॉन्ग है यार, लेकिन कॉपीराइट आ जाएगा. कुछ करना पड़ेगा यार इस चीज का, मेरे को मैं क्या करूं. It's the side as Hassan Al Haidous is among the substitutes, as is Mohamed Munt, called Qatar's only goal in the group stage at the last World Cup. अबे यार. As they play for the 13th time at a FIFA World Cup, it's the 4th World Cup for both of them, and it's the most appearances at a World Cup by a Swiss player. Goalkeeper Gregor Kubal and defenders Nico Elvedi and Manuel Akanji all played every minute in qualifying. Striker Breel Embolo scored 2 goals at the last FIFA World Cup, and he is fit to start after doubts that he would be unfit earlier in the week. प्लेयर्स आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए. So the 2 teams swapping end here at the San Francisco Bay Area Stadium. A chance for a last-minute talk from the 2 captains this afternoon. In a moment, we will have the countdown to kick off, and then we will be underway in the second Group B match. अब तुम ऐड बता दोगे? नहीं? All square yesterday between Canada and Bosnia and We are Herzegovina. underway for 1-1 the in third match Toronto. of the World Cup 2026. Whoever wins this, if indeed we do get a winner, will be top of Group B after the first round of matches. Copyright? यार. 7 6 5 4 3 2 1. Not watching the Brazil. Brazil का कल है bro. Murat Yakin said yesterday that his team would be on the front foot right from the kickoff, hoping for an early goal, hoping for an early कब है breakthrough. Brazil का भाई? Julian Lopetegui, the head coach of Qatar, डराओ मत मेरे को, मैं saying Brazil we've supporter made हूँ history भाई. in qualifying for a FIFA World Cup, and we don't want that history making to stop. Yeah, the boss certainly knows that he doesn't want his team here to make up the numbers, but Murat Yakin talking अच्छा very आज ही है 3:30 बजे रात को. positively भाई मैं about देखने what this वाला very, हूँ. very talented मैं Swiss नहीं team सोने can वाला. The do. little chest back and a chance for Embolo. It was Abashir who tried to turn it into the path of Breel Embolo. Switzerland in the light green this afternoon with the white shorts. Qatar kicking from right to left. Ball knocked forward, looking for Abdul Rizak.
And an early touch for Gregor Kubal in the Swiss goal. You can see from the length of the shadows on the pitch that the sun is directly above us here at the Santa Clara Stadium, in Santa Clara at the San Francisco Bay Area Stadium. It is just gone midday here, local time. Certainly a high noon showdown between these two, isn't it? But a very, very bright start from Switzerland. Something that, if you're passing through and taking a look at the game, maybe the way that it goes as a narrative. However, Qatar looking to assert themselves. Afif almost getting that one over the top. It was Elvedi with the header away, and now a great chance for Qatar. Edmilson Jr. foiled by Kubal. There's a feeling there from Edmilson Jr. that he may not get such a good opportunity again. That was a real mistake right at the heart of a very experienced Switzerland defence. ये क्या बॉल है? थ्रू बॉल था भाई, वो इतना गंदा थ्रू बॉल. Might have expected a cautious start from both of these teams. यही तो दिक्कत है, एक्सपीरियंस टीम very है. hot conditions. ब्राजील That has been far from the case. Really was a gilt-edged opportunity, wasn't it? Players that are so unbelievably reliable in Switzerland's defence. Swing of a boot by Kanji. Really good shot stop though, wasn't it? ये 90 minutes. Don't know how much certainly Kobal knew about it, but he did what he was there to do. 130. Perhaps a touch fortunate to make the save, but as every goalkeeper will tell you, it doesn't matter how you make the save, as long as you do. And Doyle with a little touchback. Zakaria. Elvedi. Little run made ahead there from Freuler. And the flag is up on this near side anyway. Switzerland, who beat Australia in a friendly last weekend by 1-0, and afterwards on Swiss television, Granit Xhaka absolutely laid into his team, saying that they were playing at only 90% of capacity. It wasn't good enough, and they essentially had to pull their socks up and do much, much better. He said that in the week since then, they've had team meetings, and that particular problem has been rectified. He does set the tone, doesn't he, really, for what his Swiss side need. The sheer volume of caps that he's got, the sheer respect that he's held in, the high regard of Swiss football off the back of a very good season, of course, in the Premier League. Xhaka's 147th international appearance today. Ricardo Rodriguez making his 139th. The two of them, lifelong friends. Through ball, good ball, bhai. 17 World Cup back in 2009 together. Ah, terrific foul. challenge coming in from Homan Ahmed. Offside. Through ball, अच्छा. Zakaria with the throw. Good ball. Elvedi. Worked on by Akanji. ये क्या बॉल है? ये क्या बॉल है? That could have been a bit awkward there for Abunada. वही तो. Yeah. It's a couple of times now, isn't it, that Switzerland have shown exactly what they want to do. Qatar, Get the ball Switzerland, directly क्या into the कर box रहे हो? from the slightly wider parts of the pitch, with players running beyond the central striker. अर्जेंटीना, पोर्चुगल, फ्रांस, जर्मनी और ब्राजील. यही लोग रहते हैं भाई. Plenty of height on that clearance from Abunada. Starting today in place of the much more experienced Michel Barsham. Barsham, who started 2 games at the last World Cup. Now here's a chance for Ndoye. Dan Ndoye! Excellent save. Abunada getting down low and able to prevent that effort from Ndoye. Well, the debate about who starts in goal quickly answered there from Qatar's point of view. Abunada down to his right-hand side. Really good break. A defensive mix-up which opens the gap for Dan Ndoye. Short, Really strong strike. चलेगा. Was a follow-up from Switzerland inside the 18-yard box. However, the ball wasn't pushed और into रेफरी भी बहुत सही any चीज Swiss कर दी players' है इन्होंने वर्ल्ड direction. कप में. It's a great shot, isn't it? Really gives you a sense of the scale that these players are playing in. And Ndoye with a really good early sight of goal. Strong palm by Abunada to push it away.
रेफरी व्यू तो मजा आ जाएगा यार, इन्होंने ऑप्शन दे दिया तो बिग बॉस जैसा कैमरा कंट्रोल। लेट्स गो वी द चैंपियंस। Play will restart then with a Qatar free kick. Abinada looking for Afif. थ्रू बॉल Nicely लेफ्ट, done by यही तो Andoy. हक दिया। ये कौन सी टीम है भाई, ये कौन सी ग्रीन वाली कौन सी जर्सी है भाई ये? Chance here for Qatar to hit this ball long into the Swiss penalty area. स्विट्जरलैंड ग्रीन है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ऊपर मेंशन किया हुआ to है। take. It's rather a waste. It's a wasted opportunity, isn't it? Just seen a tiny little bit of a thief in the last couple of minutes. Dylan Lopetegui knows that a man such as he is the one that can get in and amongst this Switzerland side, particularly down the left-hand side. Wants to make up for his last outing at the World Cup, really, doesn't he? Really take this tournament by the scruff of the neck. Let's go with the champion. Cause this is Qatar, who the failed to get out of the World group Cup. stage Put your flags up in in the air. 2022 when they Put were the your hosts, hands losing up all in the air. 3 of their matches. They Flags scored just up, once, and this is conceded the 7. World Cup. Zakaria. नहीं हो पाएगा, पेस ही नहीं है भाई, पेस ही नहीं है, बॉडी गेम। Still going here, Dennis Zakaria. And the block comes in from Lai. What? Terrific intensity, isn't it? Just into the 8th minute of भाई the game. पेस नहीं है और ये वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। Temperature really is a condition which is worth referring to, given the tempo that we've seen so far in this FIFA World Cup 2026. नहीं करना चाहिए यार यहाँ पर ध्यान में। So, first corner of the match. And it'll be an in-swinger. This from is the Rodriguez. World Cup. Everybody Put back your for flags Qatar. up in the air. Good corner भाई, हक गया लेकिन। Good turn. Spin and turn from Vargas. Needs support. Oh, Hasn't really got it at the भाई moment. भाई, चलेगा चलेगा चलेगा। Weight of numbers told as Qatar's कतार two निकाल लेगा ये defenders मैच, कतार निकाल लेगा were शायद। able to make the block. Now it's 3 against 3 for just a moment. The little flick over the क्या top. बॉल Abdul है? Razak ये क्या बॉल है? can't get on the end of it. Xhaka. It's another promising break from Qatar that's क्या not really led to बॉल है? anything. Great defending, doubling up, getting the ball away from trouble in their own half, and then bursting अरे forward. विंगर्स को तो ना तुम भाई, क्या कर रहे हो लोग? Right, Xhaka. विंगमैन को क्यों नहीं दे रहे यार? लेफ्ट विंग, राइट विंग, Vargas. खेलो ना गेम Xhaka. अपना अपना। कौन है उधर? Abashir. Elvedi. गुड बॉल, अंदर दे। Vargas. वागास, गुड बॉल, कॉर्नर। अरे कॉर्नर बोल Cross on the रहा हूँ। over. क्रॉस, And it was met by Danandoy. And he हक put दिया, it high. हक दिया। You don't deserve to That win this could match. and maybe Swiss, should have been the तुम opening goal. चॉकलेट Was बनाओ। met by Dan and Doy. But the next touch after the shot should be the ball hitting क्या the back of होता the है net. bro? Really Beams workable बनने chance. वाले। He's had a chance with his right foot, now with his left. What? You can see a slightly timid approach. He wants to keep it down. Makes a complete mess of it. 2 best chances so far have fallen to Dan and Doy. Let's go. Let's fight. We up. Danandoy then with Tonight. 2 good opportunities for Switzerland. Go Edmilson Jr. and with the best chance for Qatar. Qatar. And it has been a lively opening 10 minutes here at the San Francisco Bay Area Stadium. Oh, foul. That's a free kick. Free kick और yellow card भाई पक्का। Well, he's claiming there was निकाल a card, dive there. निकाल। Jassim Jabba. Such a key part, isn't he, in the midfield, Justin Jabba. He's going to be नहीं दिया क्या? tirelessly working. अभी However, proper foul नहीं, foul नहीं है, foul can't नहीं, really foul agree नहीं with his है। assessment of Foul that है being a but dive. yellow card वाला चीज नहीं लग रहा मेरे को। Referee straight over, correct decision. Free kick मिल जाएगा, ठीक है चलेगा।
कोई कार्ड निकाल रहा है? नहीं निकाला। रेफ से पंगे Key thing, मत of course, is you look at the defensive record of Qatar in qualifying and just how good Switzerland were with Whoa, what a putting spray! aside the opposition. Key areas of the match such as this where Qatar have to be resolute, well organised. There's got to be plenty of communication. This From is Switzerland's the point of view, they've got World great Cup. delivery at set pieces. Switzerland scored 14 goals in qualifying and conceded only 2. The central defenders are all up, hoping to get on the end of it. Abu Nada might well have seen that very late, but for the 3rd time this afternoon, the goalkeeper keeps it at 0-0. Showing just how important he is in the goal for Qatar. Another strong opportunity for Switzerland. I think it might have been Akanji that was trying to get a touch on the way through. Really well whipped in free kick. यार लोग FC बार्सिलोना को देख के सीखते क्यों नहीं है? मेरे को समझ नहीं आता। टिकी टाका यूज करो तो। Zakaria. Betty finds Alkanji. निकल, आगे निकल। Right, Cross. we've seen a lot of the ball on that left-hand side so far. Ruben Vargas. Will it go out for a corner? No, it won't. Xhaka. चलेगा। Might just be able to hear the sound of a jet going overhead. We're very close to San Jose International Airport. माइक बीच में आ रहा है यार। Andoy. Abashir. Little touch inside was meant for Zakaria. क्यों? उड़ाना क्यों है? Imperative this little period of दोनों time की that फटनी Qatar क्या work the way through it. Every single player behind the ball. No attempt or intent to go forward as yet. Zakaria teasing cross into the middle. Is it going to be Penalty. Is that a penalty? Penalty. What does the referee say? He says spot kick. Penalty. Foul by Abu Nada. अबे यार। अबे कीपर को लग गई क्या? And while the goalkeeper received treatment, let's have another look again. Is there a possible offside there in the middle? Oh Very, fuck, very tight, कीपर को isn't it? गलत लगी As we भाई। know, with technology, it's one that can be mopped up pretty मुंह quickly. पे but लगे, मुंह फूटा है भाई undoubtedly, कीपर का। if we're looking at a player that is onside, that गलत looks हो very गया much यार। like Abu Nada done so well so far, hadn't he? He's got to make a decision. He's got to come out. However, just a split second too late. VAR is checking it. भाई मुंह दिखाओ ना। Well, not only is it a concern for Qatar that they might be about to face a penalty, but their goalkeeper there गलत लगा clattered है। into. Fuck. As Freuler. ओ भाई गलत And लग he गया both यार मुंह attempted to पे। get on the end of that ball. It's a hefty, hefty challenge, isn't it? Ah. Brave to a degree for the goalkeeper to come out. कीपर ब्रो। Certainly has come off worse in that particular exchange and has had such a good game so far. Penalty is still खून आ रहा है क्या? checked. नहीं लेकिन अब वो कीपिंग नहीं कर पाएगा, मेरे को नहीं लग रहा। कर लेगा क्या? Moment for all. खून लग तो रहा है मेरे को। ग्लव्स पे लगा है And क्या normally, है if a player receives treatment on the field of play, there's a new law that's come in. They have to leave the field of play for a minute, unless you're a goalkeeper. As well, it gives the players a drinks break, What the break, fuck doesn't is it? But there this, is bro? certain deliberation about this and what the decision should be or could be. Let's go, we the champions. The referee is shepherding the Qatar players out of the penalty area. कतार को मिली है, सॉरी स्विट्जरलैंड को मिली है पेनल्टी। It is a penalty. आई होप कि ये हक आ जाए, मजा आ जाएगा अगर हक दिया तो। Because I want Qatar to win. Mahmoud Abu Nada has made
a number of huge saves तो ये already. सेव कर ले भाई, हिस्ट्री में नाम हो जाएगा. Can he keep this spot इंजरी kick के out बाद from Breel सेव हो गया Embolo? तो फक मजा आ जाएगा भाई. ओ भाई क्या हो गया अभी? रेफ बोल रहा है डोंट कम क्लोज. ठीक है, लाइन पे खेलना है सर Embolo को. scored twice at the 2022 FIFA World Don't come Cup. close. Referee just making sure there's no encroachment. It's Embolo, and it's 1-0 Switzerland. अबे यार. They said they wanted to make an early breakthrough, and they have done exactly that. Certainly took a while before Yeah, the yeah, actual kick was yeah, taken bro. from Breel Embolo to think about where he was going to place it. डांड उंगली करनी और फिर पेनल्टी Cool as a खाना. cucumber there, just looking on. इससे Because क्या when you've got a सिंपल man such as पेनल्टी this, लिया यार. like this in कीपर front of हक goal, दिया यार. you can rely on it finding the back of the net, casually walking up, watching Mood where खराब हो गया Abunada भाई, मैं goes, face wash almost waiting करके for the आ. goalkeeper to jump to his left, and coolly placed in the opposite corner. There's been good chances so far for Switzerland. They've dominated proceedings so far in this game. Abunada has had a cracking game up until that point. Booked as well to add insult to that injury. However, they've got to find a way to get back into this game and quickly. Embolo getting his 25th goal for Switzerland on his 87th international appearance. Goal scored by number 7, Breel Embolo. What have Qatar got in terms of meaningful play to try and get an equaliser? So important, isn't it? They get the main men on the ball. FIFA is another one that we keep talking about. Barely registered anything so far. Milson Jr. had that really good early chance as well. Milson Jr. with that little ball in field. Equalize. अगर नहीं हो पाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी. मयूक भाई वेलकम टू द स्ट्रीम. व्हाट्स अप Keep it in play. भाई? मैं नहीं सोने वाला आज रात को. मैं देखने वाला ब्राजील का मैच. The Portuguese-born Qatar I international. want to see Neymar playing back with the Brazil, you know. Be dealt with, I and want to here's see the by comeback. Elvedi. And again. Here's Zakaria. कतार जीत जाएगी मैच में, मेरे को लग रहा है. एक और पेनल्टी नहीं हुई तो चलेगा 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 ब्रो, चलेगा चलेगा. ये ओ भाई, नाइस वन यार. Afif. Huki. गेम तो है भाई, निकाल लेगा कतार, निकाल लेगा. Switzerland. It allows them just to pump the brakes a little bit, rest back into this pretty decent shape, asking Qatar to come and break us down. मो साला किसमें खेल रहा है? मोहम्मद साला. Miguel. Every player in this Qatari squad plays their football for clubs in Qatar. नहीं नहीं नहीं, वहाँ नहीं कीपर. गुड बॉल, गुड बॉल. Squad where only 2 of the 26 players actually play in the क्या हो गया? Swiss league. रोके क्यों? Main number is 9 who play in the German Bundesliga. क्या हो गया? थ्रो-इन? क्यों? नहीं, थ्रो-इन नहीं है. क्या हुआ? FIFA presidents. Kanji. What happened, bro? Zakaria. Michel Abashir. Good ball, boy, good ball. Oh, भाई save, good save यार. Abunada with another save. But it was wonderful, incisive build-up play. Patient as well. That ability to अब just मेरे को move थोड़ा मुश्किल Qatar लग रहा है. around to then create कतार the का. gaps where key passes could be made. Nice little step over. Once again, Abunada brought into action. Vargas. She? Rare misplaced pass there.
Really well played, isn't it? Akanji set the tone from the back. It's a little step over. Bolo being the man dictating proceedings. A really strong save once again. Sounds slightly changed to say that the only unfortunate thing that the goalkeeper's done is give away a penalty and concede a penalty, but other than that, a very, very solid game. Because this is the World Cup. Put your flags up in the air. Fell to Put your flags Embolo up in the rather air. than Zakaria, who has scored just 3 goals for his country, and this is 66th international appearance. More than happy to get forward though, isn't he? When Embolo comes off and holds that gap, it allows others to burst forward. This time, Sandoy. लेट कर दिया, अब तो आ गए यार, क्या भाई? Zakaria and Doy. Abashir. Elvedi. Are they trying tiki taka? अंदर दे, अंदर दे, अंदर दे. Well, it's a foul. The arm was out. And this will be a yellow card. First caution of the afternoon. कैसे Ruben फाउल है? Vargas flattened. वो खुद अब स्टेप ओवर करने के चक्कर में आगा गिरा है भाई. Towards the goal line. Such a quick player, isn't he? Vargas has been a major part of what's been good for Switzerland down the left-hand side today so far. Yellow card मिल गया Let's go गांड. sometime in that instance where Jab was possibly saying, I don't really know how to get out of the way. He's that quick. That's exactly what he's doing though. Substitute कर दिया. Oh fuck. अबे यार क्या कर रहे हो भाई? क्यों कर रहे हो? Equalize करो. So he joins Abu Nada in the book. भाई अगर ये गोल निकाल दिया ना फ्री किक में, मैं पागल हो जाऊंगा. फिर मैं पार्टी बदल. Look how crowded that बहुत 6-yard बहुत area ज़्यादा is. possibilities है तो गोल की. If this ball goes low into the area, it could go anywhere, off anyone. Nice one यार. एक और कॉर्नर. एक और Man कॉर्नर. has just been booked. Jabba, the man to put it behind. Good save यार. Good Solid save. defending. गाना मत बजाओ As please. we stop for the hydration break. Oh, With it's the Switzerland leading hydration by break. 1-0. Let's hydrate. अब तुम लोग ऐड बताओगे 800 रुपए. Because this is the World Cup. So, put your flags up in the air. Put your flags up in the air. Let's go. Let's fight. We up tonight. Hello. Who's watching me though? Hello. Can I get one more subscriber? यारी ads तुम लोग बता. ये ads क्यों आ रहे पता है? Even तो पैसे देने के बाद, क्योंकि Z5 bankruptcy में है शायद अभी. उसको बेचा गया है, ओनर चेंज होगा. FIFA के राइट्स खरीद लेना लास्ट मोमेंट पे. सही किया, बहुत सही किया. Oh, thank you so much for 100 views, guys and gays. Let me check what other people are watching or like, you know, streaming. Epic World Cup atmosphere. Oh, भाई आज ब्राजील है. मैं नहीं सोने वाला. नेमार की फोटो क्यों नहीं है भाई? नेमार खेल रहा है कि नहीं खेल रहा? आज का लाइनअप क्या है? Ah, não, só o Brasil consegue The lineup for Brazil. Todo mundo tem essa capacidade de fazer essa festa tão linda em outro país que é longe. Brazil Cara, só o lineup. Brasil consegue fazer isso. Tá ótimo. नेमार खेलने वाला है भाई. नेमार की फोटो कहाँ है? अबे ये माता का जगराता क्यों कर रहे हैं ब्राजील में? What? Let's go. We
champion. Chegou, né, aqui com uma expectativa muito melhor do que a gente imaginou, né? E amanhã é o grande momento, Hydration break né, da खत्म. estreia. Hydration break खत्म. Hydration break क्यों रखा है भाई बीच बीच में? मेरे को समझ नहीं आ रहा. ये कब से होने लगा? ये एल नीनो की वजह से हो रहा है क्या? वाह, मेरा अभी ध्यान गया है कि कॉपीराइट आ सकता है, गाना चला के रखा है. कॉर्नर क्या हो गया? आवाज क्यों गई? ओ भाई, Z5, what happened to the sound, bro? मेरा ही कुछ दिक्कत हुआ है क्या? हेलो हेलो. नहीं, मेरा दिक्कत नहीं हुआ है. रिफ्रेश. पुअर स्ट्रीमिंग भाई. This moment in time, Qatar at this moment in time, which will not surprise too many. Julian Lopetegui will know that his side won't dominate proceedings. It's just about making sure that as and when a chance does occur, I refer to it यार as हिंदी junior, कमेंट्री करूं क्या that इंडिया finds के the लिए? back of the net. But given the experience, the vast experience in this Switzerland side, players Switzerland playing won. all over Europe for some huge football clubs. It's about managing this next. ये लो भाई हिंदी कमेंट्री. रॉयलर के लिए, लेकिन क्लियरेंस आई पेड्रो मिगेल की. एल्वेडी का चैलेंज, फ्री किक मिलेगा और हिदायत भी. फ्री किक मिलेगा और चड्डी भी. चैलेंज और यहाँ साफ दिखता हुआ खुश नहीं. यहाँ देखे कहाँ थे प्लेयर, कहाँ था चैलेंज और उसकी जरूरत भी नहीं थी. What? बिल्कुल जानते थे निको एल्वेडी की क्या कर रहे हैं. ब्रो चल 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 गो लाइव. ये हरकत नहीं करना. फ्री किक और एल्वेडी ने कॉर्नर गवाया है. कॉर्नर गवाया? का खेल एल्वेडी. ये क्या कमेंट्री? कॉर्नर तो अपने आप होता है. यही चांसेस है जहां अच्छा कॉर्नर मिला है ना. लेवल हो जाती है दोनों टीम्स, खासकर सेट पीसेस में. कॉर्नर यहाँ ओ ऐसा हुआ है क्या? क्या कोई ट्रेनिंग ग्राउंड रूटीन? यही मौके है जहां से गोल दाग सकती है कतर. सही कहा आपने, क्योंकि जो 37 गोल मारे क्वालिफिकेशन में उनमें वापस से 15 वापस set pieces के तहत गुड आए थे. बॉल अकरम गुड हफीज, बॉल. हेडर हग्गू और भाई. टारगेट नहीं, लेकिन हग्गू लोग भाई. प्रयास यही का. इंजरी एक हो और गई. खिलाड़ी चोटिल. हाइपर वेनम खेल रहे हैं भाई. प्यूमा के नहीं, सॉरी यही तो है. तो नाइकी के. प्यूमा के ये कौन से है? ट्रीटमेंट पिच पर लेंगे, जिसके चलते यहाँ देखना होगा शायद अपने प्लेयर से ही. हाँ मर्क्यूरल्स है. वहाँ Cause टकराते this हुए is खुद ही the के प्लेयर से. World Cup. एड्रो वहाँ Put या your legs हुमाम up in अहमद the air. से टकराए. मुराद याकीन, क्या ये यकीन कर सकते हैं कि टेबल टॉप हो जाएंगे स्विट्जरलैंड? प्लेट पर था वो कर. यकीनन. टाइम वेस्ट करो भाई तुम गिर के. शायद वो ये सोचेंगे कि अब खराब प्लेयर को होकर मेरे को पहुंच समझ गए नहीं आता. और प्लेयर को मारी उठा रेसिंग. के बाहर क्यों नहीं लेके जाते शायद ये मेडिक्स सोचेंगे आके भाई? कि तुम दो टाइम मैचेस वेस्ट में कर रहे हो. मुहूर्त क्लॉक मिल चल रही है जाएगा भाई. क्वालिफिकेशन चलो का. ठीक है, वैसे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है सबका. सही ढूंढ है, रहे ठीक हैं. है, कोई प्रॉब्लम नहीं. पहले मैच से स्ट्रॉन्ग शुरुआत में यहाँ शॉट कॉर्नर जरूर लिया गया. Cause this is the World Cup. ये वो था. Put your flags up in the air. प्लेयर्स एक दूसरे से टकराते हुए, जिसके चलते एक कंकर्शन प्रोटोकॉल होता है. अब उन्हें बाहर 1 मिनट के लिए रहना होगा. Let's नए go, रूल्स के मुताबिक. we the champions. यहाँ पर बाहर रहना जायज. लोपेटेगी शिकायत करेंगे फोर्थ ऑफिशियल से कि क्यों जाना पड़ेगा, क्यों जाना पड़ेगा. जी नियम अनुसार जाना पड़ेगा. पेड्रो मिगेल, आपको जरूरी नहीं है कि आप वापस उधर पूरा मैदान जाकर बाहर जाए. वहां से भी बाहर जाके मैदान को कवर कर सकते हैं. काफी समय लगाया उन्होंने टच लाइन तक जाने के लिए. चलिए अब कोबेल शुरू करेंगे.
ब्रो ये हिंदी कमेंट्री वापस भी बुला दिया उन्हें। 1 मिनट रोका ही नहीं। अकांजी उसी की शिकायत करते हुए कि 1 मिनट रोका नहीं उन्हें। नियमों से आदी नहीं रेफरीज भी अभी शायद। यानी ज़ाकरिया इसी बीच गुड टैकल भाई। यानी जाका बॉल है ब्रो, रिकार्डो बॉल है ब्रो, अंदर डाल। टच पास जल्दी जल्दी, क्या कर रहे हो भाई तुम? अकांजी जो आपको बता दें एक बहुत ही बेहतरीन मैथमेटिशियन है। जितनी खराब मेरी गणित है ना करण, उससे 100 गुना ज्यादा बेहतर उनकी गणित। सेव ब्रो, तुरंत आपको कॉम्प्लिकेटेड गुड इक्वेशंस का टैकल भाई। आंसर दे देते। वही तो सॉल्यूशन ढूंढना है, वही काम है, सॉल्यूशन ढूंढना है। ओ फाउल नहीं, आई नहीं था। इस स्थिति से बाहर आए तो कैसे अबे आए? दूसरा आई नहीं, रेफ क्या कर रहा है? बड़ी आसानी से डिफेंड करते हुए स्विट्जरलैंड। निको एल्वेडी की बॉल, कोई नहीं है उधर, कोई नहीं है उधर भाई, कोई नहीं है। आठ प्रयास अब तक स्विट्जरलैंड की ओर से, 4 ऑन टारगेट, उनमें से 3 तो लाजवाब सेव भाई पोजीशन तो पूरा स्विट्जरलैंड का है यार। करते हुए। एबिशर बॉल, यानी जाका, गुड पास, थ्रू, एक नंबर थ्रू बॉल है। बारगास। निकल, टाइम वेस्ट, यही प्लेयर टाइम वेस्ट कर रहा है। ये विंगमैन खराब है अपना भाई। और अब क्रॉसिंग पोजीशन में गुड बॉल, रॉयलर फार पोस्ट पर। अब उनादा अपनी लाइन से आगे आए थे, लेकिन उससे पहले ही डिफेंसिव हेडर आया होकी का। ज़ाकरिया, एंडोय, उमाम अहमद उनके सामने है। निको एल्वेडी, सारे के सारे स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी भी कतर के ही खेमे में। निको एल्वेडी सेंटर बैक है, देखिए कितनी आगे शॉट भाई, एंडोय का गुड शॉट ब्लॉक किया गया के द्वारा, और यूसुफ कुछ कंट्रोल नहीं कर पाए। जाका, एंडोय, वन वे ट्रैफिक। एक और थर्ड स्टार्ट, वहीं से ले शॉट, वहीं से ले, नहीं ले गए लोग। छोड़ो रेमो फ्रॉइलर। भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने टाइम पे डी लाइन से शॉट मारता था भाई, पर डी लाइन नहीं, हाफ लाइन ज्यादा से। जल्दबाजी भी नहीं कर रहे हैं स्विट्जरलैंड, क्योंकि जरूरत नहीं है, 1-0 से आगे है। कतर कुछ ज्यादा जोर नहीं दिखा रही, जोश नहीं दिखा रही। एल्वेडी क्या यहाँ से शॉट लेंगे? नहीं लेंगे, गांडू है भाई। सोच तो रहे हैं इलाई ज़ाकरिया को। चलेगा चलेगा, गुड प्ले। जाका, ऐसा लग रहा है प्रैक्टिस में है स्विट्जरलैंड की टीम। काफी वक्त बॉल पर। ओ क्या बॉल डाला है! एम्बोलो, एंडोए, व्हाट द या! 3 खिलाड़ियों ने घेरा हुआ था उन्हें। बेहतरीन बैकहील, लेकिन एम्बोलो का बैकहील, एंडोय थे वहां, कंट्रोल किया गया, फिनिश करने की कोशिश, लेकिन बॉडी बैलेंस को बैठे। मौका जरूर था, लेकिन अटैक वर्सेस डिफेंस साफ दिखता हुआ ये मैच। 10 मिनट और है हाफ टाइम के लिए। यूसुफ फिसले, यानी जाका, इनके भाई। गुड पेस, गुड बॉल भाई, गुड बॉल। ऑफसाइड है, ऑफसाइड है, शायद ऑफसाइड है। नहीं, क्रॉस दागा। क्या बोलो, किस बात की शिकायत कर रहे हैं? क्या हो गया? हर बार हो गया इसका। पेड्रो मिगेल फिसले हुए थे तो उनके आगे नहीं निकल पाए, मैं समझा नहीं। आप देखें बॉक्स में प्रवेश करते हुए, लेकिन हल्का सा क्लिप किया गया पीछे से, रन बनाने की कोशिश करते हुए। What? इंटेंशनल था नहीं, लेकिन फाउल है। अगर आप कांटेक्ट बनाए पीछे से, आगे से, कहीं से भी, फाउल तो दिया जाएगा। Yeah, I know baby. एम्बोलो टारगेट मैन स्विट्जरलैंड के लिए आजकल रन में मशक्कत करते हुए। फाउल। ओ भाई ये रेड कार्ड होगा। नहीं,
ऐसे challenges देखे, कई ऐसे क्या challenges, कर रहे हैं भाई, मेरे को challenges, चिढ़ा रही कतार और से expect करेंगे क्योंकि बॉल पर स्विट्जरलैंड की टीम ही है, दोनों फ्लैंक्स का इस्तेमाल करते हुए, और वाह वाह, जो कि ऑफसाइड से आए हैं रूबेन वारगास। भाई उसने जाने नहीं दिया बॉल को यार, बॉल नाइस बाहर जा चुकी थी टच लाइन से, जिसके चलते गई थी, गोल किक दिया गया। ओ नहीं गई थी, बाहर गई है, बाहर गई है, बाहर गई है, बाहर गई है। दोनों ही अनएक्सपीरियंस टीम है भाई, फ्रांस, ब्राजील, पोर्चुगल, अर्जेंटीना, जर्मनी, ये सब के अगेंस्ट। जर्मनी को कुत्ता बना देगी ये लोग, फ्रांस भी ज्यादा बड़े टीम के खिलाफ खेल रहे हो तो आपकी रणनीति क्या होगी? आप जो मोमेंटम की लहर होती है उसको कैसे बदलेंगे? वेव कर रहे स्टेडियम वाले, मोमेंटम की लहर, मैक्सिकन वेव, यस यस यस, क्रेजी है भाई, यही कल्चर तो फुटबॉल का एक नंबर लगता है। इसमें आप वीकर नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा वीक है कतार की टीम, तो खाली डिफेंड करते हुए क्वालिटी को आप नहीं रोक सकते, आप डिफेंड कर सकते हैं, भूख दिखा सकते हैं। भाई इसको मुंह में पड़ा है और इसको कुछ हुआ नहीं। 18 या 15-20 का मैनेजर यहाँ मैक्सिकन वेव क्या लग रहा है यार। वाह, ग्रेगोर कोबिल भी शामिल हो गए थे उस शॉट में, आप देख सकते थे वो कैसे अपने बाजू फहरा रहे थे जब क्राउड भी वो मैक्सिकन वेव नहीं कर रहा था। हिंदी कमेंटेटर्स हेलो, कई बार कुछ भी मतलब कुछ भी बोलेंगे जो मन में आया। अच्छी शॉट और एंगल के साथ यहाँ देखें, इस तरह के मोमेंट्स में आप कुछ कर सकते हैं। डिस्प्ले उड़ा दिया भाई, सरप्राइज अटैक हो या डिस्प्ले उड़ा दिया। मैंने देखा था जुलियन लोपेटेगी ने कुछ संकेत दिया था अपनी टीम को, क्या पता ये जो आखिरी 8-7-10 मिनट हो इस पहले हाफ के, थोड़ी और इंटेंसिटी दिखे कतर की ओर से, थोड़ा हाई प्रेस दिखे ताकि गलती करे स्विट्जरलैंड की टीम जैसा शुरुआती क्षणों में किया था एडविल्सन के उस मौके के लिए। जाका, एंडोय, अच्छा टर्न एंडोय का, और फाउल गवाया है अहमद ने। कह रहे थे कि मेरा टीममेट वहां रन बना रहा था, येलो कार्ड दिया जाना चाहिए इस तरह के चैलेंज के लिए। पीछे से चैलेंज किया गया। ये क्या आवाज आ रहा है? ज़ाकरिया, अच्छा जेट ही आया ऊपर से स्टेडियम के, कुछ गिरा हुआ है। रिकार्डो रोड्रिगेज, रूबेन वारगास, इसकी स्ट्रैपिंग खुल चुकी है। अकांजी, वारगास, रूबेन वारगास 2 को पार किया और फाउल गवाया है ओनीबा पर। एडवांटेज ले लो ना भाई तुम, वो जल्दी से फ्री किक लेना चाहते थे, इतनी जल्दी कि अकरम अफीफ नहीं पढ़ पाए। फाउल मतलब फाउल ले रहे हो, एडवांटेज ले लो, पूरा पेस बना हुआ था, मोमेंटम था रोक के फ्री किक लेने में। एबिशर, इनका डिफेंस अच्छा है यार कतार का, शायद इक्वेलवेरी, क्या फॉर्मेशन पे खेल रहे लोग। डेनिस ज़ाकरिया इतनी एडवांस पोजीशन में खेल रहे हैं। औपचारिक तौर पर एबिशर जो है वो राइट विंग बैक है और ज़ाकरिया सेंटर बैक, अब जाके राइट विंग बैक पे गए एबिशर, ज़ाकरिया आमतौर पे वहां पर मंडराते हुए। 4-4-3 खेल रहे लोग, बात करने का मौका ही नहीं मिला इस पहले हाफ में क्योंकि स्विट्जरलैंड ने पूरे तरीके से अपने अटैकिंग थर्ड में फुटबॉल खेला है। ट्रायंगल फॉर्मेशन में पासिंग हो रही है, अटैकिंग थर्ड में ही पासेस खिलाते हुए और एज एक्सपेक्टेड गुड बॉल। अबुनादा को सतर्क रहना पड़ा था। क्या कीपर है यार। ये मौका देखे, फर्स्ट टच आउट ऑफ द फीट, क्रॉस करने की कोशिश, टारगेट पर क्रॉस, गोलकीपर शायद कनेक्ट कर सकते थे, वहां कनेक्ट कर सकते थे। अबुनादा कॉर्नर यहाँ स्विट्जरलैंड के लिए। लंबे कदभाटी के सेंटर बैक्स आ जाएंगे आगे, एल्वेरी, अकांजी और ज़ाकरिया, कुल मिलाकर तीनों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर
कुल मिलाकर उनके गोल्स की बात करें तो 10 गोल मारे हैं। बॉल लेंगे ये शॉट कॉर्नर, ब्लॉक, पहुंची थी एम्बोलो तक, निकल लेकिन निकल। शॉट हुआ ब्लॉक। अरे यार यूसुफ, पेस नहीं है, मेरे को दिख गया, फाउल है, फाउल चलेगा। गवाया है ज़ाकरिया ने और येलो कार्ड मिल जाएगा यानी ज़ाकरिया को। वो भाग रहे हैं साइड मार्टिनेज से। What? काउंटर अटैक रोका, जानते थे क्या कर रहे हैं। Yellow card, number 6, Denise Zakaria, Switzerland. ये ऐसा स्टैटिक वॉइस क्यों आ रहा है भाई? इससे पहले 373 मिनट हो चुके थे कि कतर ने गोल नहीं मारा। अब मैं मैनुअल अकांजी नहीं हूं तो मेरी गणित उतनी अच्छी नहीं, पर एक हाफ और जोड़ दीजिए 45 मिनट। यदि ये हाफ मेरे में ख्याल गोल से ना मारे 4 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे क्योंकि 45 उतना तो मिनट गया और है। जोड़ दीजिए, लगभग 420 मिनट हो जाएंगे कि कतर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल ना मारा हो। ये बात बदलेगी क्या? एडमिल्सन के जरिए एक बार फिर से ग्रेगोर कोबल ने अपनी काबिलियत दिखाई। एडमिल्सन दूसरी बार करीब आए हैं, इस बार बेहतर फिनिश किया, पर वो एंगल नहीं ढूंढ पाए जब वो फार पोस्ट की ओर भेजना चाह रहे थे। बहुत गंदा एंगल हो गया था। पाले में आ गई आसपास, ग्रेगोर कोबल के पैर अड़ाया, सेव करवाया। लाइन देखिए, लकीर देखिए, क्यों विवाद कर रहे हैं आप? 1 इंच के लिए, 1 मिलीमीटर के लिए क्या फर्क पड़ता है? एक मिलीमीटर पीछे ही तो करने की जरूरत आपको। क्या डम प्लेयर है भाई। बहुत गहमा-गहमी करते हुए भाई रेफ से पंगा ले रहे हो तुम, पागल हो गए हो। हताशा रेफरी पर निकाल रहे हैं। फिलहाल हुमाम अहमद वही तो पकड़ नहीं उस शॉट में, एबिशर क्लियर करेंगे। ओ भाई क्या पेस से भाग रहा है बंदा। उम्मीद भरा पास था वो। ठीक है चलेगा, गुड वन। आलूई की ओर से रेफ से पंगे मत लो, ऑलरेडी एक गोल तुम्हें इक्वलाइज करना है, नहीं हो पाएगा भाई। मैं जाका जिस तरह पोजीशन पूरा स्विट्जरलैंड का है। स्विस डेनिस ज़ाकरिया, सबसे ज्यादा नाम मैंने शायद इस पहले हाफ में ज़ाकरिया का ही लिया टच है भाई। डैन एंडोय अब फ्लैंक्स बदलते हुए वारगास के साथ। इसका ड्रिबलिंग मस्त है, इनका लेफ्ट विंग का, स्विट्जरलैंड का। पहुंच चुके गुड बॉल, नहीं कट बैक खुकी ने ब्लॉक किया। इन्हें और खुकी ने ही क्लियर किया है। अकरम अफीफ को गिराया रिकार्डो रॉड्रिगेज ने। यार मैं ब्राजील का मैच कैसे देख पाऊंगा यार। ये देखना दिलचस्प होगा कितना एडेड टाइम होगा, क्योंकि याद कीजिए कई खिलाड़ी को हेड इंजरी मिली तो इसलिए ट्रीटमेंट मैदान पर, फिर हाइड्रेशन ब्रेक भी आया बीच में। लेफ्ट विंग, अरे लेफ्ट विंग को गेम बनाने दो ना। 6 मिनट मिल गए कट इन करने का मौका एंडोय के लिए। 6 मिनट अतिरिक्त समय जुड़ा गया है। रिकार्डो रॉड्रिगेज, गुड बॉल, एंडोय, गुड सेव, मुनारा का सेव और क्लियरेंस आई। क्या कीपर है ये, क्या कीपर है। 4 सेव निकाले भाई ने, एकदम क्रूशल। इंजरी के बाद भी खेल रहा है यार। ग्रेनिट जाका रुकने का नाम नहीं ले रही है स्विट्जरलैंड, और दबाव डालना चाह रही है। दूसरा गोल चाहती है इस पहले हाफ के अंत में, ताकि दूसरा हाफ एक महज औपचारिकता बन जाए। क्यों जबरदस्ती भाई। जाका, गुड बॉल। ओ भाई 5वां सेव भाई, कीपर यार। सबसे अहम खिलाड़ी उभर कर आए हैं 26 वर्षीय महमूद अबुनादा। क्या कीपर।
मैन ऑफ द मैच भले ही गोलकीपर। गोल खाया हो, पर जिस तरीके से उन्होंने सेव निकाले हैं, साफ पता चलता है क्यों उन्होंने जगह ली है मिशाल बरशाम की, जो इनके अनुभवी गोलकीपर हैं। डेब्यू किया था मैन ऑन अक्टूबर में वर्ल्ड कप प्लेऑफ्स के दौरान जुलियन लोपेटेगी के लिए। उससे पहले अबू नादा की जगह गुड बॉल, बरशाम खेल रहे थे। गुड अच्छी बॉल। बॉल ये लेके। कतार हक देगा मेरे को लग रहा है। अब हक दिया। अहमद प्ले में रख पाए हैं क्या? नहीं रख पाए बाहर हैं। चले गया यार। चलेगा, अच्छा ट्राई किया उसने। पहला हाफ जहां पूरी तरीके से स्विट्जरलैंड ने भाई मेरे को नींद जकड़ आ कर रही है रखा, यार, मैं क्या करूं? निचोड़ कर रखा हुआ है कतर नहीं को। सो सकता, ब्राजील का मैच है। कतर के नाम 4 शॉट, 2 ऑन टारगेट, दोनों एडमिल्सन की ओर से आए। वहीं 77% पोजेशन के साथ 11 शॉट लगाए हैं, 5 ऑन टारगेट कॉफी मंगा लूं क्या? स्विट्जरलैंड की ओर से। डेनिस ज़ाकरिया, काश कल होता यार मैच, बहुत मजा आता। मिशेल एबिशे, गुड बॉल। रियल एम्बोलो होल्ड अप कर पाएंगे। गुड बॉल। वारगास को शानदार फुटबॉल, लेकिन नतीजा नहीं। बहुत करीब आए वारगास, मांग कर रहे हैं कॉर्नर की। ये बैक हील होल्ड अप प्ले के बाद एम्बोलो की काबिले तारीफ, और वारगास जानते हैं उनको बेहतर करना चाहिए था। हल्का सा वो डिफ्लेक्शन आया, उसने कतर को बचाया। तो कॉर्नर मिला है स्विट्जरलैंड को। वारगास एक बार फिर से। गुड बॉल भाई यार, गुड बॉल। चलेगा अभी भी, क्या बोल सकते हैं। रूबन वारगास, कॉर्नर। ज़ाकरिया, फिर से ब्लॉक हुआ है शॉट। So people are subscribing me, huh? Subscribing? अकरम अफीफ को डांट पड़ गई है अब। कौन डाटा? ये था वो सेव, अबू नादा का क्या एक बार फिर सेव से। कर रहा है भाई, ये क्या सेव? इतने सेव निकालेंगे। भले ही 1-0 से पिछड़ रही है इनकी टीम, अभी तक तो मैन ऑफ द मैच प्रदर्शन कतर के गोलकीपर का आया है, महमूद अबू नादा। छठा सेव उनका। हालांकि कई ऐसे सेव्स थे जो क्रॉस थे, जो उनको सेव करने पड़े क्योंकि वो टारगेट पे आ रहे थे, पर तब भी अपना काम तो पूरा कर रहे हैं। इससे अच्छा क्या करेंगे भाई? सेव किए हैं और फिर 1-on-1 में पेनल्टी भी गवाई है। डहया इस डहया को कंपटीशन दे रहा है भाई। गेई, उमाम अहमद, लाजवाब बॉल। नहीं ब्रो यार, या बन सकती थी, लाजवाब बनी नहीं। वाहवाही कर दी थी एडमिल्सन के प्रयास की। कॉर्नर तो मिल गया है, लेकिन अकरम अफीफ इस बार सही तरीके से बॉल रखी है। डाले एलो। कॉर्नर नहीं होने वाला, तुमसे गोल नहीं होने वाला, तुम भूल जाओ। पहले हाफ के खेल में फर्स्ट हाफ होने आया भाई। हग्गू टीम, ये ऐसे नहीं बोलते, इंडिया तो बहुत पीछे। एक पहला हाफ जिसमें केवल एक ही टीम शामिल रही है, शायद अब तक का सबसे डोमिनेटिंग प्रदर्शन एक टीम की ओर से इन ओपनिंग मैचेस में हमें देखने को मिला है। जाका, इको एलबेरी, जो ग्रानिट जाका के पूर्व क्लब के लिए खेल रहे हैं आजकल, बोरुसिया मुंचनग्लाडबाख। मेरे को नींद आ रही है, हाफ टाइम में सो जाऊंगा भाई मैं सीधा। ओ बॉल, बॉल, फाउल, पेनल्टी नहीं, शॉट, पर उसको बंद किया। उड़ गई नींद। एबिशेर 2-0 कर सकते थे। लाल दीवार में दरार लास्ट मिनट लास्ट प्ले। ठीक है, बजाई दी वैसे।
एक ऐसे हाफ के बाद जिसमें घुटन महसूस 1-0 कतर, Swiss 1 पेनल्टी Qatar गवाई थी 0 अबुनादा ने और ब्रील एम्बोलो ने ठंडे दिमाग से तब्दील किया। क्या कीप किया है भाई इसने। मौके बहुत बनाए स्विट्जरलैंड ने, लेकिन अंत में इजाफा महज एक बार। हाफ टाइम पर स्कोर कतर 0 स्विट्जरलैंड 1। जुड़े रहेगा दूसरे हाफ के लिए। मैं क्या करूं, मैं सो जाऊं कि मैं क्या करूं। I don't know what to do. क्या आवाज आ रहा है? मेरे पीसी गई है। 14 लाख व्यूज बस। ओ भाई व्हाट द फक, क्या है ये भाई? यार ब्राजील का मैच कैसे छोड़ दूं यार, मैं क्या करूं। हाफ टाइम है मेरे ख्याल से। हाफ टाइम पे बंद कर दूं कि क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। ब्राजील के मैच के सीधा लाइव आऊंगा मैं। I don't know what to do. I don't know what to do, bro. I think I should like just, do main matches live stream, yeah. Where there'll be like more supporting team and oh, what? Major changes? What are those? ठीक है गाइस, मिलते हैं 3:30 बजे रात को ब्राजील के मैच के लिए। गुड नाइट। 2 घंटे बाद